Dear students, in this video on electrostatics, we will study some numerical problems based on Gauss theorem from your NCERT book. So let me begin with a very simple problem on how to find out area vector. So, see, a rectangular plane of size 10 centimeter into 15 centimeter is placed at 10 centimeter from origin parallel to xy plane. Find area vector. Right? This is the first part. Now, आपके पास एक शीट है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और उसको एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखा है. अभी पैरेलल कितनी भी दूरी पे रखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो दिस 10 सेंटीमीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. राइट. अब एरिया वेक्टर के लिए सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, एरिया का मैग्नीट्यूड. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन इज, so it's length into breadth. You can see length into breadth, you know this relation. So 10 centimeter, 10 centi means 10 to the power minus 2 into 15 centimeter. Centi means 10 to the power minus 2. So multiplying these two, we get 150 into 10 to the power minus 4, and then we convert it to scientific notation, and then we get, say, this is 1.5 into 10 to the power minus 2. अब एरिया वेक्टर है तो हमें मुझे इसका वेक्टर की डायरेक्शन भी चाहिए, एंड यू कैन सी दैट ये दिस एरिया इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस. तो एक्स वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी. तो ये एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस इज के कैप. तो हमको ये यूनिट वेक्टर यूज़ करना है. सो द एरिया वेक्टर इज नाउ दिस मच, 1.5 into 10 to the power minus 2 k cap square meter. So we have found out the area vector. Now comes the second part of the problem. Say, if the electric field in the region, यहाँ से शुरू है, if the electric field in the region is given by E is equal to 5 I cap plus 7 J cap minus K cap Newton per coulomb, find the electric flux through this given plane. ठीक है. So to find electric flux, you know the relation that electric flux is equal to scalar product of electric field and the area vector. Now electric field is 5 I cap plus 7 J cap minus K cap dot the area vector 1.5 into 10 to the power minus 2 K cap. आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स वाई, इसमें आई जेड के टर्म्स हैं पर यहाँ नहीं हैं, तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे. ओनली द कोफिशिएंट्स ऑफ के कैप विल बी मल्टीप्लाइड. सो द फाइनल रिजल्ट इज minus 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton meter square coulomb raised to the power minus 1. This is the total flux passing through the given area. Now, the next important problem, it's a very important problem and it is asked in board examination also. So let us try to understand it first. Let's see. Okay. So now you see, the electric field component in this given figure are Ex is equal to alpha x raised to the power 1 by 2. Ey is equal to Ez is equal to 0. That means in this region we have electric field along x-axis only. Direction of electric field is this one, right? And along Ey and Ez there are no electric fields. Now the value of alpha is also given here. Alpha is equal to 800 Newton per coulomb meter raised to the power 1 by 2. First part, calculate the flux through the cube. फर्स्ट पार्ट है इस क्यूब से पास होने वाला आपको फ्लक्स पता करना है. ठीक है. एंड द सेकेंड पार्ट इज द चार्ज विद इन द क्यूब, एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो गिवन टू बी 0.1 मीटर. तो हमको ये साइड भी दी हुई है. राइट. नाउ टू फाइंड आउट फ्लक्स we must know the area vector also.
So here you can see that the electric field is along this direction, ठीक है? And for this face, the area vector is also along the same direction, A, right? On the left hand side, the electric field is along this direction only, but the area vector is opposite to it, you see? Area vector is opposite to it. Area vector is always directed outwards, that you know, right? Now for all other faces of this cube, the angle between area vector and electric field will be 90 degree. So their flux is going to be 0. So only two faces, this face and this face, only these two faces will contribute to the electric flux. So let's see how we do it. Okay. So now electric flux through phase 1. I have taken this as phase 1. So phi 1 is E dot A, that we already know the relation, and it is EA cos 180 degree. Now the angle here between area vector A and electric field E is 180 degree, right? And at this phase, the value of x is A, yeah, from origin to this place. Origin से यहाँ तक इसकी distance है A, तो x की value हो गई A. So the value of electric field is this much now. Alpha x की जगह पर हमने रख दिया A raised to the power 1 by 2. The area of this face is A square and value of cos 180 is minus 1. So we get this result phi 1 as minus alpha and A की पावर जोड़ दीजिए 2 plus 1 by 2, it is going to be 5 by 2. So we have got phi 1, the flux through phase 1. Now we will find out the flux through the second phase also. Now for the second phase, you can see that the electric field outside and area vector is also outside. They both are along the same direction, so it is going to be positive. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस फेस पर हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 2a. आप देखिए ये a और ये a जुड़ जाएंगे तो x की वैल्यू है 2a. And electric field is not uniform, it is changing. So flux through the second phase, the phi 2 is, you can see, EA cos 0 and electric field is alpha और अब x की जगह रखना है 2a. 2a raised to the power 1 by 2. The area vector is a square. Value of cos 0 is 1. And from here we get 2 की power half under root 2 alpha and a raised to the power 5 by 2. So now we have two flux. Flux through one phase is this one. Flux through phase 2 is this one. So the total flux will be sum of these two और बाकी सारे phases का flux 0 है. So to find out the total flux, yeah, you can see now the net flux is phi 1 plus phi 2. So positive वाला हमने पहले लिख लिया under root 2 alpha a raised to the power 5 minus alpha a raised to the power 5 by 2. कॉमन जो हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में है under root 2 और 1 यहाँ से आ गया -1. Now the value of under root 2 is 1.41 or -1, so we'll get 0.41. The value of alpha, it is given in question as 800. Now a raised to the power 5 by 2. अभी पावर 5 by 2 आपको निकालना नहीं आता है तो आप इसको ईजी कर सकते हो. You can break it as a square into a raised to the power 1 by 2. 5 by 2 को आप 2.5 कर सकते हैं, ठीक है. So the product of these two is going to be this much. The value of a is given in question as 0.1. So 0.1 meter उसका स्क्वायर हो गया into under root 0.1, ये हो गया. Now multiplying and solving all this, you get this much. So the total flux is 1.02 Newton Coulomb raised to the power -1 meter square, right? Now comes the next part. The next part is you have to find out the total charge enclosed inside the cube.
now you have this Gauss theorem that total flux is equal to total charge upon epsilon naught. So from here this total charge is going to be phi into epsilon naught. Now phi की वैल्यू आपको ऑलरेडी आप निकाली है दिस मच, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 into 10 to the power minus 12, and now multiplying these two you get the total charge enclosed as 9.2 into 10 to the power minus 12 coulomb. So in this way, and this solution is much simpler. NCERT का solution समझने में आपको मुश्किल हो सकती है. This is an unsolved problem given in your NCERT book, and it is asked in board examination very often. So let us look at this one now. See here. A point charge plus 10 microcoulomb is at distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter, as shown in this figure. What is the magnitude of electric flux through the square? So see, you have this square piece of side 10 centimeter, और this is the center of the square, और इससे 5 centimeter ऊपर यहाँ पर हमने रखा है चार्ज. अब चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब तरफ जाएंगी, but the symmetry is missing. So just to make things symmetrical, we can assume one full cube, a Gaussian surface. तो हम ये मान सकते हैं कि हमने क्यूब बनाया है साइड 10 सेंटीमीटर का, राइट? और उस 10 सेंटीमीटर का जो आपने क्यूब जो पूरा किया, उस क्यूब के सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ. दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. अब देखिए कि चार्ज की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो ये जो चार्ज है ये सारे फेसेस से इक्वी डिस्टेंट है, राइट? सो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सभी फेसेस से पास होंगी, और दे ऑल विल बी इन इक्वल नंबर्स, राइट? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ फेस. तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस विल बी 1/6 टाइम. सी अ क्यूब हैज 6 फेसेस. सो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं taking the symmetry of a cube. So let us see how we are going to do it now. So we assume that the charge is placed at the center of a cube of side 10 centimeter, and equal number of electric field lines will pass through each face. So the flux through each face is going to be 1/6 times q upon epsilon naught. See, this is your Gauss theorem. Gauss theorem is what? Total flux थ्रू अ क्लोज सर्फेसेस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और हमें ईच फेस का चाहिए तो 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया. सो 1/6 10 माइक्रो मीन्स 10 to the power minus 6, और यहाँ पर वैल्यू आपने रख दी एप्सिलॉन नॉट की. एंड सॉल्विंग दिस द टोटल फ्लक्स कम्स आउट टू बी दिस मच, 1.9 into 10 to the power 5 Newton meter square coulomb raised to the power minus 1. The one thing to note is, do not leave your answer without unit. यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वन. थैंक यू.